Good morning, Houston. This is me, Uzair Hassan, and I welcome you all in your favorite morning show transmission जो आप इस वक्त देख रहे हैं on your favorite TV channel NTV Houston, the biggest South Asian TV network in North America. And आज के बारे में अगर हम बताएं, आज के एपिसोड के बारे में क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, and interesting guest is going to join us on the set of Good Morning with NTV Houston. हमारा जो couch है, हमारी जो hot seat है particularly, इसके ऊपर आप देखते हैं नए guest every day, and we try to incorporate different people with different ways of life. जितने लोग हैं particularly जो कि different phases में अपने गुजर रहे हैं and different fields में excel कर रहे हैं, we try to invite them on the show. तो हमारे साथ वो join करते हैं, and आज की जो episode है उसमें सबसे पहले बात करेंगे about this interesting video, and interesting video क्या है वो definitely आपको आगे दिखाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो कुछ डिटेल्स हैं इसकी, it's a very good quotation as well that when a child or when ever a son or a daughter is left with their father, तो वो क्या कर रहे होते हैं बच्चों के साथ. It's a treat to watch as well, and when mother is not there, तो आप इस तरह की चीज़ें डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी फेमस आर्टिस्ट जो कि बहुत अच्छे ड्रमर भी हैं एंड बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं. किस तरह इस पर्टिकुलर आर्टिस्ट ने अपने बच्चे को एज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है, इट्स डेफिनेटली यू वांट टू वॉच इट फॉर नाउ. लेट्स गो एंड वॉच दिस. This is the kind of drum. This is the percussion section. This is the trumpet. Show us the trumpet. Yep, we're good. Okay, here we go. Let's play a tune. बात करेंगे एक इंसिडेंट की जो कि आपने ऑलरेडी देखा था कि कोरोना वायरस किस तरह जो है ऑलरेडी स्प्रेड हो रहा था, एंड विद सम ऑफ द डिटेल्स एज वेल. कुछ अगर मैं उसके बारे में बताऊं, फैक्ट्स आपको ऑलरेडी पता हैं, हमने अपने पिछले एपिसोड में भी उसकी सम डिटेल्स मेंशन की थी. हाउ द वर्ल्ड इज़ टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर डिजीज़, एंड इसके साथ साथ द प्लेसेस एंड द कंट्रीज़ दैट आर सफरिंग फ्राम लेस हेल्थ मैनेजमेंट इशूज़ जिनके अंदर हैं, तो वो ऑलरेडी तैयार हैं, लेकिन स्क्रीनिंग के जो प्रोसेस हैं वो एयरपोर्ट्स के ऊपर काफ़ी तेज़ हो चुके हैं. एंड अगर हम एशियन कंट्रीज़ की बात करें, सो पाकिस्तान हैज़ रिसीव्ड सम ऑफ द किट्स टू चेक अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर कि किस तरह वो इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं. एंड हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं अबाउट द रेस्क्यू ऑपरेशंस बाय डिफरेंट कंट्रीज़ अबाउट टू बी डन एज वेल. अभी भी जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुके हैं जो ये प्रोसीजर्स हैं. हमारे पास कुछ इमेजेस हैं फ्रॉम द श्रीलंकन एयरलाइंस एज वेल, जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को वुहान सिटी, द मोस्ट अफेक्टेड सिटी जो कि इस वक्त बिल्कुल लॉकडाउन की सिचुएशन पे है, वहाँ पे उन्होंने एक वॉलंटरली एक फ़्लाइट भेजी है. एंड इस वीडियो को पर्टिकुलरली आपने डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखा होगा, एंड देयर आर अदर फ्लाइट्स एज वेल, लेकिन इसकी पिक्चर्स जो हैं अब बाहर आप लोग देख सकते हैं. एंड जो ये पूरा क्रू है जो इन बच्चों को वेलकम कर रहा है, किस तरह रैप्ड है, एंड हाउ देयर फैमिलीज़ हैव सपोर्टेड कि वो अपने चाहने वालों को, द पीपल हु दे लव द मोस्ट, अपनी फैमिलीज़ को भेज रही हैं in terms of helping those students to get out. It's something very commendable, and our entire channel, in fact the entire nation salutes them. I want you guys, आप इनकी glimpse देखिए. हम वापस आते हैं and आपको बताते हैं आज के प्रोग्राम में और क्या क्या है. Welcome back after the video, and अब बात करेंगे about Kamran. Who is Kamran? Kamran on Bike is a famous social media page जिसके ऊपर Kamran अपनी journey post करते हैं about how he is traveling in different parts of the world. And right now उन्होंने कुछ दिन पहले अपनी post की pictures about his recent trip, एंड क्या डिफरेंट है इस ट्रिप के बारे में वो डेफिनेटली आपको बताएंगे. एंड अब जो कुछ डिटेल्स हैं, आई एम रीडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड इनफैक्ट जो कामरान ने बताया है अबाउट हिज रीसेंट ट्रिप, तो आई वुड लाइक टू मेंशन दैट एज वेल. आपके सामने इमेजेस भी आ रही होंगे अब अबाउट कामरान, एंड सम ऑफ द थिंग्स इंक्लूड ऑन डेल्टन हाईवे इन अलास्का. तो इट्स डेफिनेटली समथिंग टू वॉच. I want you guys to go and watch the story of Kamran and उनकी journey. Let's go and watch this.
Welcome back after this incredible and courageous men's video. And हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे about our upcoming guest who is a performer, in fact a dance performer. उन्होंने एक art direction भी जो है somehow किए in Bollywood movies. किस तरह incorporated थे, we are going to talk about that as well. And recently launched a production house as well. A women with the many hats. I want you guys to go and take a break. Break के बाद Gargi Duggal is going to be on the set of #GMN TV. Don't go anywhere. This will be a very nice day. शुगरलैंड में आ रहा है अलरब्बा वर्ल्ड फूड। 61,000 स्क्वायर फीट में होगा आपका अपना देसी मिनी मॉल, जहां ग्रोसरी से लेकर होम फर्निशिंग तक ये है वन स्टॉप शॉप डेस्टिनेशन। लोकेटेड इन न्यू टेरिटरी एरिया एट यूनिवर्सिटी एंड ग्रैंड पार्कवे, अलरब्बा ऑफर्स रिटेल स्पेस फॉर ऑल बिजनेसेस। Al-Rabba World Foods. For more information, call Amir Ali at 512-652-8462. सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार। हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं? क्या है ख्याल? आ गई नई मलका रेसिपी मसाले, खालिस और बेहतरीन अज्जा, मुनफरिद जायका, नो एडेड एमएसजी और ग्लूटेन से महफूज। लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार गोश्त, पंजाबी तड़का दाल, पेशावरी कढ़ाई। मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल। आज तो कमाल कर दिया। कमाल तो मलका ने किया है। तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका। मलका, कुछ नया पकाओ। Our story begins more than 60 years ago inside an abandoned chicken coop where our founder discovered a retired teacher living, no home, no health care. So she said no to this injustice and yes to transforming lives. It's this drive, this compassion that inspired AARP. Today we empower people to choose how they live as they age. We advocate for health and financial security. We strengthen communities everywhere. We are AARP Houston, creating real possibilities. Kick off the new year with a new Cadillac from Ron Carter Cadillac. Own the new 2020 Cadillac Escalade with $9,000 customer cash, or drive for just $829 a month. The first ever 2020 XT6 premium luxury crossover for $499 a month, or the new 2020 XT4 luxury collection just $379 a month. All for 39 months lease with just $1 down. Your only Houston area Cadillac to your door dealer, RonCarterCadillac.com. When it comes to protecting yourself and your partners, all the information out there can be overwhelming. Visit our website. We are a free and confidential service, striving to help you stay informed and stay notified. We are committed to a healthy Houston. मनपसंद सुपरमार्केट, जहां की फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रोजन फूड आइटम्स आपको सबसे अच्छे प्राइस में मिलेंगी और हलाल ज़बीहा मीट भी मिलेगा। दाम मनपसंद, नाम मनपसंद, तो फिर क्यों ना जाए मनपसंद। लोकेटेड एट विलक्रिस्ट ड्राइव, ह्यूस्टन, नॉर्थ हाईवे एंड विलियम कैनन ड्राइव, ऑस्टिन, टेक्सास। तो नाम याद रखिएगा, मनपसंद सुपरमार्केट। डुबकी लगा ससीटो का मजा बड़ा ससीटो टोमेटो केचप मजे की डुबकी। Welcome back after the break. You are watching Good Morning with NTV Houston. This is me, Uzair Hassan, and हम आपको वेलकम कर रहे हैं इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में, brought to you by Kings Construction
powered by and is in fact spiced by Malka Foods and refreshed by Fructose juice. आज की जो हमारी गेस्ट हैं बिफोर गोइंग टू द ब्रेक, जो हम इंट्रोडक्शन का एक हमारा प्रोसीजर है, हम बताते हैं आपका अबाउट हु इज़ कमिंग टू द प्रोग्राम. तो आज की जो गेस्ट है हमारी, शी हैज़ बिन a phenomenal part in some of these integral movies जिसके बगैर शायद हिंदी सिनेमा जो है complete नहीं हुआ है. So she is considered to be the art director, she is a dancer, performer, recently received an award of Women of Substance as well. तो डिले के बगैर उनसे बात करते हैं, पर बात करने से पहले आई वॉन्ट यू गाइज टू गो एंड वॉच दिस वीडियो के बाद वापस आते हैं एंड गार्गी इज गोइंग टू बी ऑन द सेट ऑफ #GMNTV. लेट्स गो एंड वॉच दिस. Welcome back after the video and let me introduce you to Gargi Duggal. Hello Gargi, how are you? I'm doing good, Uzair, and thank you so much for having me on the sets of Good Morning NTV Houston. Thank you so much Gargi once again for joining us. Gargi, सबसे पहले तो Women of Substance is something जो आपको अवार्ड भी मिला, रिकग्नाइज्ड हैं. परफॉर्मेंस बात करेंगे डिफरेंट डांस परफॉर्मेंसेस की भी जो आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग टू दैट, टेल अस अबाउट Women of Substance. क्या बेसिक क्राइटेरिया होता है Women of Substance का, and according to you, how do you define this award particularly? So the criteria was how a woman has made a mark in different areas. At the same time, how is she a complete woman? And I had sent all my details as I have worked throughout my years of career. One, I'm an entrepreneur. I own a UC Mass, which is a world-recognized Bacchus-based program, and I own that center and it's the first one in Texas. The other thing that I have is my own production house, which I just recently launched. Basically interested in doing short films, commercial videos, modeling, also do some events. Definitely. Gargi, with that, आपने कुछ mention किया about the production house as well. Tell us about that. How important is it कि production house के अंदर, according to you, what are the 3 basic ingredients जिसके बगैर production house complete नहीं होता है? कुछ इसके बारे में बताएं. I would say you definitely need a team, a good team. Production house wouldn't be complete without that. Of course, you need some good talent. Which I'm seeking. I am wanting to myself also be part of it. Behind the scenes. In front of camera काम करने का mood है इस दफा? Yes. I have done some minor projects in the past, and of course with this production house launch, my idea is to go bigger and do bigger things. Definitely. Gargi, according to you, as you mentioned, there is a huge responsibility on the people, especially जो कि production house run करते हैं, and कुछ कभी कभार इसके अंदर problems भी आती हैं when you are कभी कभार talent find करना मुश्किल होता है to appropriate role के हिसाब से you are unable to find that. Sometimes हमने देखा है script के अंदर minor changes भी करने होते हैं. तो are you all prepared for that as well? And क्या possibilities हैं इस तरह की? And किस projects की तरफ ज़्यादा आप incline करेंगी थोड़ा सा in the beginning? In the beginning, I would definitely want to do video albums. Songs basically. But I wanted to go for talent, like seek the talents that is based in US, as my production house would be and is based in US. I definitely want to seek the talent around here. Do want to give them a chance, and I want to shine too. Above and beyond what I've done in the past. Definitely, which is very necessary. Gargi, as आपने mention किया about these some of the things as well, and talent के हवाले से भी that you have to find the talent as well. Particularly इसका headquarters आप अभी कहाँ सोच रहे हैं? In which city of the United States to start with? Haven't thought, but I'm based in Dallas. So probably Dallas ही होगा. Exactly. But I always feel like East Coast, New Jersey and New York is like a mini Bollywood for US, and so
definitely would want सेम to. एज के टेक्सास का मिनी हॉलीवुड जो है वो ऑस्टिन है, इसी तरह या LA है एंड न्यू जर्सी है. बट डू यू थिंक देयर इज अ ह्यूज कंपटीशन राइट नाउ फॉर अ साउथ एशियन टू स्टार्ट विद दिस बिजनेस, बिकॉज पीपल आर इन दिस बिजनेस फॉर लाइक ओवर For the longest time. सेंचुरी से भी हो सकता है कुछ प्रोडक्शन हाउसेस बन गए हो. But then there is always a start, and where there's will, there's a way. Yeah. So I definitely am thinking to find a way. As I have the will. So let's see. And I just took off with this production house in December. I just did a partnered event with somebody in Dallas. It was just a New Year's Eve, pretty small event, but I just wanted to launch my production house, and I kept the name as production. Because it's pretty generic, so I can have a vast portfolio rather than just having to do events in the Definitely locals. थोड़ा सा different भी है, and it's not like the mainstream things that are going on. Exactly. Production house से related भी there are some certain short films जो कभी-कभार production house उसकी तरफ जाते हैं. But right now the main concern about for the people is the content basically. There is content widely available. It all depends on people कि उनको किस तरह का content देखना है, and at the end basically it's the audience who is going to decide कि आपका जो बनाया हुआ प्रोडक्ट है वो अच्छा है या नहीं है. स्क्रिप्ट राइटर कितना इंपॉर्टेंट है किसी शॉर्ट फिल्म के लिए या लॉन्ग फिल्म के लिए, इवन एज यू हैव बीन पार्ट ऑफ सम ऑफ द इंटीग्रल मूवीज, उसके बारे में बात करेंगे. हाँ जी. It is the ingredient of the whole production house. Script writer अगर ठीक नहीं है तो of course it can go uphill or downhill, as everybody knows, and it's proven for many years. So definitely that's a big thing in the production house. But I do want to make my own team. At the same time would want to collaborate with the established script writers or any of the such teams like directors or actors, etc. Okay. And talent, as हमने starting बात की थी, talent is also very necessary. There are certain platforms as well, there are certain casting agencies as well जो आपको talent provide करती हैं. What's your initial floor plan इसके हवाले से, that you are a one man army and आपको सब चीज़ें खुद भी करनी है. So how are you actually thinking to seek talent basically? किस तरह ढूंढने का इरादा है basically? So on social media, directly? Yes, so social media is a big best friend these days. So definitely I would avail that, which is available. At the same time, I think what I've heard is the agents, agencies, casting agents and casting agencies. Those kind of people would definitely be a big help. So my idea is to reach out to them as well. Okay. And एक और चीज़ जिसके बारे में हम प्रोडक्शन हाउस की तरफ वापस आएंगे, लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट यू परफॉर्मिंग. यू वर एंड यू आर अ परफॉर्मर एज वेल. आप डांस परफॉर्मेंसेस भी करती हैं. टेल अस अबाउट दिस पर्टिकुलरली. तो ये डांस पर्टिकुलरली कहीं से सीखा है, एंड हु वाज द मेन इंस्पिरेशन बिहाइंड दैट फॉर नाउ? या पहले भी? Yes, so I am a professional Bharatnatyam dancer. Okay. This is one of the most difficult dance जो मैंने अभी तक visually कोई चीज़ अगर witness की है. Yeah, so 4 basic Indian classical dances, and then there are so many other which branched out, but these are our 4 original one, and Bharatnatyam is one of them. So I happen to have a Sharad degree in that. I started at the age of 2. And at the age of 2? At the age of 2, I think my mom is my inspiration. She's the woman behind my dancing skills, dancing talent. She could never perform because she came from a conservative family. Okay. I am a small town girl as well. Which city? कहाँ से exactly? It's Gujarat, Nadiad. It's a very small town, and I come from there. And basically, she used to drag me to the dance school, and we used to live in another city at that time. And I started dancing at 2, and then I was eligible to start giving exams as Bharatnatyam needs that at the age of 6. But I started learning then. जो प्रोसीजर होता है किसी भी डिफरेंट डांस का आपको यूजुअली बता दिया जाता है आप डांस कर लिए. व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन अ भरतनाट्यम डांस और जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं डांस की, इसकी क्या है? कोई आपको क्लासेस किसी और को भी देनी पड़ती हैं इन टर्म्स ऑफ qualifying it, या क्या होता है? आपको कंटिन्यू रखना पड़ता है इसको? You should continue. Like I have lost the touch in Bharatnatyam, but you know how when you are a child your mind is elastic and you are
you can accept many things and that will stay with you forever, pretty much that way. So I haven't lost the touch. Okay. But my dance form is more semi-classical, as I do more Bollywood dances. But of course, every dance form has its own uniqueness, and Bharatanatyam has its posture and the style of sitting. Kathak has the circles, Manipuri has its own form, and then the softness of dancing, and then Kathakali has the facial expressions with all the heavy and loud makeup. So those are the 4 forms of dances. ठीक है. With that, एक special performance की बात करेंगे. Going back a little, 2 decades back अगर हम जाएं, almost 2 decades, Commonwealth Games 2002. कहाँ किसने approach किया था particularly, and what you performed in Commonwealth Games? It's one of the biggest platforms. Right, and there were people who were been chosen in Manchester area. They were Bangladeshis and Europeans together. The whole team came in Gujarat to select certain people with Recruit different. करने के लिए teams वहाँ से आई थी. And they basically wanted to see different talents, and they not only chose a dancer, but they had a artist and they had a painter, and then so different people, like 5 or 6 of us were chosen. We all did perform, but then we also went through different roles when we were creating the sets out there. So basically we not only just performed, but behind the scenes, whatever props part of were the team required. as well. आप team भी थी सिर्फ. Team B भी थी, and you were the performer as well. Tell us about that. इतने सारे लोगों के सामने ही perform करना. How was that feeling particularly? And the choice of song होती है इस तरह के events में, कितना मुश्किल होता है identify to which song to choose for which event? ये किस तरह की कोई science है इसके पीछे? Sometimes there are theme-based performances, but I think with the Commonwealth specifically, they chose India and they showcased India. So basically, we had the sets which represented India, of course, because you are not in India and you want to represent the country. So they basically chose India as the theme. But there are performances that are theme-based, and I have done such performances which are storyline-based and not only just a piece of performance for 2 minutes and you leave the audience. It's like back and forth. You constantly come and go in front of the stage. Gargi, Commonwealth Games के बाद how was the career change, and उसके बाद जो opportunities आई, या what was the level of the confidence after performing over there, and उसके बाद कौन से कोई ऐसे project जो आपको याद है जो mention करना चाहें? Of course, a woman goes through different phases of life, as you know. मैं तो छोटी सी मछली हूँ, let's put it that way, but you know how the celebrities also, when they get married, they have children, they take a sabbatical, they want to rise back again, resurrect again. So when I was little, around 14, I went through a major incident in my life, and I got an accident which twisted my leg, and it was a minor thing. Now if you see it, just a ligament tear inside, ACL जिसको बोलते हैं, which is very common in the sports. It's a sports injury. And I used to play sports too. India में जो कबड्डी वगैरह खेलते हैं schools में. And that's how I had this, and I started living with it. As I had mentioned, I'm from a small town. So ये जो injury हुई थी, it's because of the कबड्डी खेलते हुए एक लड़की मेरे पे गिरी, and this is what happened. अब small town में you go through many things like X-rays and all. We should add a title of a कबड्डी player as well आपके. I don't know that. Body देख के definitely किसी को लगेगा. But yeah, so MRIs नहीं थे उस time पे in that small town, and I basically lived with it for 28 years. I thought that's my life. I never stopped dancing, on and off, choti moti performances, Diwali pe kar liya. So after Commonwealth, the day I came back, I got engaged, and in like 3-4 months I got married. It was a big switch from India to coming here. The struggle was real. We came as a student, so we had to just survive in a different country, go through your visa process, whatnot. I kept performing in Indian cultural programs everywhere. Particularly जो injury थी, how much time did it took basically इसको पूरा खत्म होने में, या you to get well? So 28 years I just lived with it. So कभी चलते पैर twist होता था, एक blackout हो जाता था मेरे सामने. I have to put my leg back to its position. So it was real, and I like my pregnancy's वजन बढ़ता था, and it was even horrible than what you would imagine.
Just 3-4 years back, I really went through the surgery, and I thought that I'll only be able to walk but not dance anymore. But I went a notch ahead, and I went for the competitive dances, and I just won in 2018 2 awards for डॉक्टर ने best बोला नहीं था कि ये dancers. पर्टिकुलर ब्रेक डांस नहीं करने का, या आपने प्रभु देवा वाले स्टेप्स नहीं करने हैं? ब्रेक डांस नहीं करती थी. Mine was more of a classical based dance style, so I still maintain that somehow. अगर कोई मुझे ब्रेक डांस करते हुए भी देखेगा, लगेगा कहीं तो वो क्लासिकल टच आता है, एक्सप्रेशंस बड़े ज़बरदस्त आते हैं मेरे. But so that's what I want to tell the viewers, that all what kept me going was the dance passion. So one should never leave their passion. Has to वही अपना that's the push that will make a person get up from the bed. सारी बीमारियां दूर करके they can be back to normal. Especially एक छोटी सी हम इंसिडेंट भी शेयर करेंगे अपने व्यूअर्स के साथ, इनफैक्ट अबाउट a 5-year-old girl getting an appreciation award from Guinness Book of World Records. ये चीज़ रिकॉर्ड में क्यों नहीं पाई, तो ये बताइए, और ये लड़की कौन थी, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं. I was quite young, so of course this credit goes to my dad. मम्मी को क्रेडिट देती हूँ मैं हमेशा डांस के लिए. मम्मी को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने डैड को ले जाने दिया इतने बड़े मिशन पे, right? I mean, he went a year before and he's like, nobody that young has gone before, so let me take my child. And so he decided. I was 5 years. कहाँ बात हो रही है, पार्क में घुमाने की बात हो रही है, कहाँ लेकर गए थे आपको? सीधा मुझे हिमालयाज ले गए वो. हिमालयाज के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर. I crossed 12,800 feet high walking for certain days in snow. Freeze हो जाते थे पैर, उस टाइम पे इतने equipped नहीं होते थे हम. But Guinness World only gave me the appreciation letter. They said आप अगर बता के जाते तो हमारा crew आता and we would have just tracked. Recorded it as well. So my dad's like, we lost the chance, but it is for real that I did this. And I'm still the youngest, I guess. I've never heard. A boy went then after who was 11 years old. डिफरेंट चैलेंजेस आ गए, लंबे बाल हैं, लंबे नेल्स हैं, लंबी दाढ़ियाँ हैं, सबसे इजी चैलेंजेस हैं, मतलब जो है ना, अपने आप पर्सनल ग्रूमिंग ख़त्म कर दें और आप कोई ना कोई रिकॉर्ड बना लेंगे. विद दैट आपकी जो इन्वॉल्वमेंट रही है बीइंग असिस्टिंग इन सम ऑफ दिस अमेजिंग बॉलीवुड मूवीज़, लेकिन बात करने से पहले वी आर गोइंग टू अ वेरी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. वी आर गोइंग टू कम बैक आफ्टर दिस ब्रेक के बाद बात करेंगे दिल तो पागल है, मोहब्बतें एंड फिज़ा, वन ऑफ द 3 मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज़ जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया, जो कि बहुत अरसे से उनका वेट कर रहे थे उस मूवीज़ के रिलीज़ होने का. क्या रोल था गार्गी का इन दोज मूवीज़? आई वॉन्ट यू गाइज टू गो एंड हैव रेस्ट. कोई 1 मिनट का ये कमर्शियल्स देखिए, वापस आइए, गार्गी से बात करेंगे अबाउट दीज मूवीज़. लेट्स टेक अ ब्रेक. This will be a very nice day. शुगरलैंड में आ रहा है अलरब्बा वर्ल्ड फूड. 61,000 स्क्वायर फीट में होगा आपका अपना देसी मिनी मॉल, जहां ग्रोसरी से लेकर होम फर्निशिंग तक ये है वन स्टॉप शॉप डेस्टिनेशन. लोकेटेड इन न्यू टेरिटरी एरिया एट यूनिवर्सिटी एंड ग्रैंड पार्कवे, अलरब्बा offers retail space for all businesses. Al-Rabba World Foods. For more information, call Amir Ali at 512-652-8462. सुनो, आज क्या पकाऊं? कुछ नया पकाओ यार. हर रोज का है देखो एक ही सवाल, आज क्या पकाऊं, क्या है ख्याल. आ गए नए मलका रेसिपी मसाले, खालिस और बेहतरीन अज्जा, मुनफरिद जायका, नो एडेड एमएसजी और ग्लूटेन से महफूज. लखनवी बिरयानी, हैदराबादी अचार गोश्त, पंजाबी तड़का दाल, पेशावरी कढ़ाई. मुझको देखो मिल गया इसका एक हल, रोज है मजा नया, आज हो या कल. आज तो कमाल कर दिया. कमाल तो मलका ने किया है. तुम ही तो हो मेरे दिल की मलका. मलका, कुछ नया पकाओ. Our story begins more than 60 years ago inside an abandoned chicken coop where our founder discovered a retired teacher living, no home, no health care.
So she said no to this injustice and yes to transforming lives. It's this drive, this compassion that inspired AARP. Today, we empower people to choose how they live as they age. We advocate for health and financial security. We strengthen communities everywhere. We are AARP Houston, creating real possibilities. Kick off the new year with a new Cadillac from Ron Carter Cadillac. Own the new 2020 Cadillac Escalade with $9,000 customer cash or drive for just $829 a month. The first ever 2020 XT6 premium luxury crossover for $499 a month, or the new 2020 XT4 luxury collection just $379 a month. All for 39 months lease with just $1 down. Your only Houston area Cadillac to your door dealer, RonCarterCadillac.com. When it comes to protecting yourself and your partners, all the information out there can be overwhelming. Visit our website. We are a free and confidential service striving to help you stay informed and stay notified. We are committed to a healthy Houston. मनपसंद सुपरमार्केट जहां की फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, फ्रोजन फूड आइटम्स आपको सबसे अच्छे प्राइस में मिलेंगी और हलाल ज़बीहा मीट भी मिलेगा। दाम मनपसंद, नाम मनपसंद, तो फिर क्यों ना जाए मनपसंद? Located at Wilcrest Drive, Houston, North Highway and William Cannon Drive, Austin, Texas. तो नाम याद रखिएगा, मनपसंद सुपरमार्केट। डुबकी लगा ससीटो का मजा बड़ा ससीटो टोमेटो केचप मजे की डुबकी This will be a very nice day. Welcome back after the break. You are watching Good Morning with NTV Houston, brought to you by King's Construction, spiced up by Malka Foods and refreshed by Frutos. My साथ हैं Gargi, talking about these incredible movies. First of all, tell us about your particular experience working in these movies, and in सारी movies में sets किन movies में लगे हुए थे और आपका क्या role था? So basically, I'm a bachelorette in architecture. Yeah. Of course, then I made a switch and I decided to pursue IT later after the 2009 recession. But Yeah. I have worked as an architect here in US as well. So when I was an architect, we have to go through a thesis, and that's how you graduate. You go through that. My passion with the creativity, dance, and the set design kind of inclined me towards doing the art direction and do the thesis on that. Again, from a small town, going to Bombay, जैसे वो movies में दिखाते हैं, that was for real. Cultural shock था किसी तरीके का? सब कुछ तो था ही, but Bombay मतलब Bollywood, वही पता होता है. A girl who is 18, 19-year-old, parents से झगड़ के कि कुछ करना है बड़ा, you know. Yeah. I decided I want to go, and they let me go. They gave me money, whatever. I got to go. बस में I meet my cousin, second cousin, for real, movie जैसा. And I tell her that this is why I'm here. She was also traveling. No, she lived there and she was working there, but we were not in touch. Second cousin है तो थोड़े से far off. But I told her that this is my requirement and that's why I'm here. And I swear I had no clue मैं कैसे किसी को मिल पाऊँगी, कैसे I'll make the connections. But she lived somewhere where somebody used to work for a studio who had connection with Sharmishta Roy, and for real, she made it work and I got an appointment. So got to meet her. And ये किस year की बात है, if you would like to tell us? हाँ जी. ये अभी कौन सी year की बात चली है? It's the 1999, 2000 जब चीज़ें बहुत, you know, people relate with social media now. Of course. उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, एक शायद लेटर कहीं से मिल जाए तो बड़ी बात होती थी. Yeah. And that's how I went to Bombay, got in touch with her. And she just she liked the idea about me doing thesis,
but part of it, she's like, you have to shadow me all the time. You have to do what I do to learn. मैं सिर्फ ऐसे नहीं दे दूँगी and तुम thesis नहीं लिखोगी. Which I think helped me a lot because हम जो 4 दीवार वाले घर देखते हैं वो रियल में नहीं होते जब सेट पे होते, सिर्फ 2 दीवारें लगी होती है, आधा छत नहीं लगा होता, things like that. And then of course was it new to you as well? अच्छा experience था seeing all these things, all the fancy things. थोड़ा सा mesmerizing भी था. And अभी आप किस मूवी की particularly बात करें जिसका सेट आधा लगा हुआ? मोहब्बतें की पूरा विलेज बना हुआ था जो पूरे टाइम वो पहाड़ों से आते हैं उतरते हैं. There is a village जहाँ पे पैरों में बंधन है, शूट हुआ है, या वो जो फुलकारी वाली दुकान है जहाँ पे I forget the name of the Archana Puran Singh और उनकी शूटिंग हुई. So not all the sets because I always used to shadow her and I was waiting that I'll be able to see big stars, but वो कभी नहीं होता था. She used to leave the set before they would come, their vans would come. So छोटे मोटे stars दिख गए, but the big ones I could never see them. Okay. But the experience was real. Definitely, it was fun you to learned know a lot. more. As you have mentioned about फिज़ा and अगर हम बात करें दिल तो पागल है की, तो इसका एक्सपीरियंस इस पर्टिकुलर अगर मैं आपसे ब्रीफ में पूछूं तो इन 2 मूवीज़ का क्या एक्सपीरियंस था एंड व्हाट यू एक्चुअली लर्न फ्रॉम दीज 2 मूवीज़ पर, क्योंकि हर एक की थीम डिफरेंट है. वी कैन से कि ये 2 मूवीज़ की कंपैरेटिव थीम सेम है. हाँ जी. स्टार कास्ट सेम है. मोहब्बतें एंड दिल तो पागल है डायरेक्टर वाज द सेम. So Dil To Pagal, I haven't gone on the sets. I got to work on the real floor plans, which were already done and it was released. So quite a difference. I worked on Mohabbatein, Fiza and Har Dil Jo Pyar Karega. They were going on at the same time. Shooting was going on. Dil To Pagal ho chuki thi. Okay. And so she gave me the sets on, I mean the designs and all, which I superimposed. I got to work and understand. So I have a whole compiled book which gives you the idea lights कहाँ से आएगी, shadow कहाँ से आएगा, color combination ये क्यों use किया है, character का psychological क्या था जिसकी वजह से इसका room ये बनाया था शाहरुख खान का, या you know करिश्मा कपूर and माधुरी दीक्षित का room कैसा था. And award for best dancer तो खैर normal बात होगी for you as well, but what were some of these awards you would like to mention, especially जो कि dance performances के बारे में ले, which were very important to you particularly? So in childhood, like I said, I got many awards and then of course Commonwealth, and then that was a stop. छोटे मोटे performance कर लिए. The comeback was after my knee surgery. I had to fight या फिर जो भी बोलते हैं husband के साथ नोक झोंक कि I want to go back, I want to start my dance career again. And there was this competition which came to Dallas, Dance USA Dance, and I'm part of this Arya Dance Academy जिसके through I keep performing. तो हमारा group, we were part of the adult group and we got to perform, and they just chose out of 60-70 performers. Wow. बच्चे बड़े, all types of performers. I got to be chosen as the best dancer. That was like a comeback. अंदर से I don't know how big an award. It was a big award for Texas, but मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, शायद बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, because I came back after my knee surgery and started a competitive level of dancing. सही है. And जब हमने बात की about the Women of Substance Award and you being an entrepreneur in Texas media, ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा इसके बारे में बताओ. Entrepreneurship, मैंने एक business शुरू किया है which is education based. So I have like 2 sides of coin. मेरी exactly कोई 10-15 चीज़ें एक साथ चल रही हैं, तो किस तरफ कौन सी चीज़ें ज़्यादा फोकस में, और इस particular you just start के what's the history behind this? So if you see my students perform, do the magical math जिसे बोलते हैं all over the world, which is abacus based math. पहले जो हमारे grandpas करते थे, 1 beat is 1 number. This is infused with new technology. This is more like 1, 2, 3, 4, but ये 5 है, ये 50 है, ये 500, 5000 है. And then they just visualize those beats in their mind and they would say the answers. So if I start asking them 5 plus 3 plus 2 plus minus 10, and they would right away give you the answer. So it's kind of a magical, and parents are really happy. Preparation especially क्या होती है, खाने में क्या देते हैं बच्चों को, मैथ्स की बुक्स खिलाते हैं आप लोग, किस तरह? It's a special technique that they have to come learn in our center to be such a magical. In US, in Texas, it's one and only center as of now. In Plano, जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहीं पे हम चलाते हैं. How many students you have catered up till now, and
कितना टाइम लगता है इतना प्रोफेशनल होने में, एंड बड़े बच्चे आ सकते हैं थोड़े से बड़े So 4 through सूट में बैठे 13. हुए 4 through 13 is the age group. The younger the child is better because, like I said, their They learn child fast. mind is elastic. They learn more. It takes 2.5 years to become a bachelorette. We do give bachelorette degree to them. But I just started last year, last स्कूलिंग 2019 के साथ चीजें January. चल रही होती हैं चीजें, या इट्स अपार्ट फ्रॉम स्कूल्स दे आर यूजुअली It's कमिंग? in parallel and it's non-school curriculum program. So totally different. तो स्कूल से आते हैं फिर आपके पास आते हैं आपको लोग, या Once a week they have to come for 2 Okay, hours. so it may be a weekend as well, maybe. Yes, Saturdays are my busier days Okay. So comparatively. who are the teachers particularly? कौन magic techniques, magicians कौन है आपके पास? So we are connected with the head office franchise. So they come, they do audits. We train our teachers, but we do see their background. So they are actually teachers or subbing in schools, which makes a big difference. They have children the same age, which makes them even more, motherly than Sorry. anybody else. And Gargi, with that 2020 के plans के बारे में बात करें, as you have started your particular career in the productions as well, students के ऊपर भी काम कर रही हो, particularly what's your favorite for 2020 and ज़्यादा focus कौन से वाले project पे रहेगा for the 2020? I have been always balancing the different dimensions or whatever I take under my arms. So it will be the same. In parallel, UC Mass भी चलता रहेगा, which is the Abacus based program, and Gargi production is just launched. So that's my Particularly Gargi baby. कहाँ पे ज़्यादा नजर आएंगे 2020 में? कभी कभी वो जैकेट पहन के बिल्कुल टीचर जैसी नजर आएगी, और सही है। कभी कभी ग्लैमरस रोल में भी नजर आएगी. प्रोडक्शन है उसके बारे में वापस आएंगे, हमारे प्रोग्राम का भी थोड़ा सा तो टाइम रहता है, तो मैं डेफिनेटली कुछ चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज सम ऑफ द पीपल हु आर वाचिंग आवर प्रोग्राम आर एस्पायरिंग एक्टर्स एज वेल, दे आर एस्पायरिंग स्क्रिप्ट राइटर्स एज वेल. कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आपको डेफिनेटली वो लोग, लेकिन पर्टिकुलरली फॉर योर चॉइस इन द प्रोडक्शन हाउस, किस तरीके के लोगों को यू आर फाइंडिंग राइट नाउ, व्हाट्स द इमीडिएट चॉइस ऑफ पीपल दैट यू वांट टू कोलैबोरेट विद, और यू वांट द टीम टू बी fully completed? Yeah, of course. I have a page called Gargi Productions on Facebook. They can always reach out to me over there. I am in need of script writers, videographers, actors, singers. What else? I don't know. Indian Idol type कुछ plan करना चाह रही हैं या Not a वैसे? reality show, Okay. but definitely I think my first baby project would be a small video album. वीडियो एल्बम Very वीडियो में close खुद to my होंगी? heart. वीडियो में खुद होंगी, बता दें और व्यूअर्स को. हाँ जी. वीडियो में खुद होंगी? चाहती तो हूँ. Yeah. I don't know, अब व्यूअर्स मुझे सहारा. क्या रोल पर्टिकुलरली आपको, आप देखिए बेसिकली हर एक्टर को अपने फ्लॉज एंड हर एक्टर्स को अपने कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में पता होता है. अकॉर्डिंग टू यू बीइंग एन एक्टर, अगर हम थोड़ी सी आपको कंसिडर करें कि यू आर स्टार्टिंग समथिंग, व्हाट्स योर प्रेफरेंस जिसको आपको लगता है कि मैं इस पर्टिकुलर रोल या मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए फिट हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, मैं ये रोल कर सकती हूँ या मैं ये चीज़? Yeah, I can always do a नखरे वाला role pretty well. नखरे वाला. Okay. Which is more bubbly, which is naughty, which is not a sad and Humorous and comical characters की तरफ कर you are सकती going हूँ to मैं. do. Yes. Okay. I feel that I would be better to launch myself that way. Okay. than And anything challenging else. roles, for example, आपके लिए क्या होंगे जिसको definitely you would love to try particularly, लेकिन comparatively अभी आपको लगता है कि यार उसके लिए मुझे थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, I need more motivation for If that. given a challenge, I can do anything. That's how my mindset is. But of course, a sad and a non-glamorous role would be the toughest one. ठीक है. But I would definitely would like to try that out. अच्छा. And कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो आप अपने फेलो या जो आपका को एक्टर होगा उसके अंदर देखना पसंद करती हैं या करेंगी पर्टिकुलरली? Haven't ever thought about about that. it? But that's a good question. I would always want the co-actor Compatibility. to be even more compatibility and chemistry तो चाहिए on screen. चाहे वो friendship वाला role है कि प्यार वाला role है या कोई भी type एक enemy role भी है, तभी भी you need that chemistry on screen to show up. So that's definitely there. But if a person would be more stronger than my skills, that would be a biggest challenge and would be able to. Gargi songs की बात करें, as you are preferring to do some certain songs as well, what are some of the things that are missing in the songs that are made today? जो albums release हो रही हैं, what do you actually see जो आप comparatively अगर आपने song produce किया या बनाया
उसके अंदर वो चीज़ें आप डेफिनेटली नहीं करेंगे. इट्स रैपिंग या बीट बॉक्सिंग, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं? Yeah, so everybody likes a different type of genre, and me personally always love emotional because that touches a human heart right away compared to any other वो बार वाला song है, दारू पी रहे, दो shots. Party songs basically. Party songs, I love it when you are at the party, but I think if you want to touch somebody's delicate chord, I think it would be an emotional song. ठीक है. In the end particularly IT professional आप हैं, and being an IT professional, ऐसा कौन सा काम किया आपने जो आप अभी regard कर सकते हैं, because you are into so many things, but being an IT professional, is it boring being an IT professional first of all? Not really, because I'm not a technical IT professional, and I wouldn't say वो भी boring. उनके लिए वो भी yeah, everyone, they enjoy the people it, who are that's why enjoying they're their doing job, it. definitely. हाँ जी, but I'm more on the business side, so I just have to go talk to the clients, convince them that this is how we are going to change this in the system, and so it's more about the talking. So I love kind of a marketing kind of a role and a sales, and I'm on the support side, so I do pieces of technical pieces of it, but then I'm more talking to the clients. Bilkul. Thank you so much, Gargi, for problem. joining us in the program. It was a pleasure having you over here. Same and here. Definitely आपकी जो आगे कंपनीज प्रोडक्शंस एंड दीज चीज़ें जो आपकी ये सारी चीज़ें जब स्टार्ट होंगी, सो वी आर डेफिनेटली वांट यू टू कम अगेन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट एज वेल, बट राइट नाउ हम साइन ऑफ कर रहे हैं. I would like to say the viewers that I would like to end our session with this last thing that आप इस कैमरे में कैमरा 3 की तरफ देख के आप बिल्कुल अपना मैसेज बता सकते हैं आप क्या कहना चाह रही हैं. I would like to let the viewers know that I would like to end this session with Uzair, fun-loving, handsome आज Uzair. होस्टिंग मैंने एंडिंग इनसे करा रहे हैं, मैं रिलैक्स हूँ जी. So just wanted to let the viewers know that I love this quote from the poem of Robert Frost, and I always say that to myself and would like to inspire the viewers that I have promises to keep and miles to go before I sleep, miles to go before I sleep. So until my last breath, I'm going to do what I love to do, my passion, and balance the life with all the passion that I have. थैंक यू सो मच. और ये गार्गी स्पेशली याद करके आई थी, रात में जो है याद किया था ये बोलना ज़रूरी था. ये बोलना ज़रूरी था. थैंक यू. आई वाज जस्ट किडिंग एंड आई विल सी यू इन अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ गुड मॉर्निंग विद एनटीवी ह्यूस्टन. अगर आपने अभी तक एनटीवी के ऑफिशियल ऐप डाउनलोड नहीं किया तो अभी डाउनलोड करें, एंड यू कैन वॉच दिस एपिसोड कम्प्लीटली ऑन यूट्यूब एंड हमारी एनटीवी की ऐप पे. टिल देन आई विल सी यू एक और एपिसोड के साथ, उसके बाद मिलेंगे आपसे उसी एपिसोड में. टेक केयर.